हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल रे स्वागत। पेडागोजी रे 50 मार्क्स रो क्वेश्चन आसुची। आपण माने जदी फर्स्ट अटेम्प्ट रे क्लियर करिया पई चाहुचंती समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखंतु एवं प्रैक्टिस करंतु। चलंतु डिस्कस करबा यार प्रथम प्रश्न कोन रहिची। फर्स्ट प्रश्न देखंतु Which of the following is not coming under the uses of observation in assessment? निम्नोक्त मध्यरु केउटी असेसमेंट एवं ऑब्जर्वेशन अंडर रे नुहे। इट इज यूज्ड टू स्टडी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन केस ऑफ शाय एंड एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। इट इज यूज्ड टू स्टडी एंड record actual pupils behavior in the natural environment. It is used in ascertaining the general trend of opinion of a group. It can be utilized for the purpose of observation of a single individual pupil or group of pupils. यार सटीक आंसर हो ऑप्शन सी। It is used in ascertaining the general trend of opinion of a group. Which is not a factor of democratic management? केउटी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रो फैक्टर नुहे। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, इम्पोजिशन। ऑप्शन डी इम्पोजिशन डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रो फैक्टर नुहे। Which of the following is both qualitative and quantitative? निम्नोक्त मध्यरु केउटी बोथ क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, स्टडी, इवैल्यूएशन। यार आंसर हबो ऑप्शन डी इवैल्यूएशन इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। पेडागोजी इज ए साइंस ऑफ टीचिंग। ए प्रश्नटी आपण मानकर 3-4 थर आसीची। यार आंसर हबो टीचिंग। पेडागोजी इज ए साइंस ऑफ टीचिंग। Which of the following is a demerit of observation? More reliable, more searching, time consuming, very flexible. यार आंसर हबो ऑप्शन सी टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्जर्वेशन रो डिमेरिट। Who was the propounder of multiple intelligence theory बा multiple theory of intelligence? यार आंसर हबो गार्डनर। ऑप्शन सी मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी रो गार्डनर आपण मानकर मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी देइथिले। ए प्रश्नटी आपण मानकर गत डिसेंबर 17 रे होइतिबा ओटीटी पेपर 2 रे मध्ये आसीची। सेम क्वेश्चंस। Which is not associated with intellectual development? Intellectual development रो केउटी associated नुहे। मेमोराइजेशन, concept formation, observation, socialization। ऑप्शन डी socialization intellectual development रो associated नुहे। concept formation primarily relates to concept formation कहा सहित relate cognitive development, cognitive development, psychomotor development, affective development। ऑप्शन ए concept formation relates to cognitive development। IQ of a person is 150 and mental age is 30, then what is the value of chronological age? आपण मानकर आईक्यू देइछि, मेंटल एज मध्ये देइछि एवं क्रोनोलॉजिकल एज बा सीए आपण मानकर बाहर करिया पई कहिछि। तो आपण माने जानि छथि आईक्यू रो फार्मूला होछि आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। देन आपण मानकर आईक्यू देइछि 150
मेंटाल एज देइछि 30 क्रोनोलॉजिकल एज देइनी सेति पई सीए इनटू 100 देन आपण मनकर सीए इक्वल टू सीए देइनी सीए इक्वल टू 30 इंटू 100 बाय 150 150 को आपण मनकर कटेबा 0 0 देन आपण मनकर 15 दौने इंटू 2 इंटू 10 इक्वल टू आपण मनकर 20 आंसर हबो ऑप्शन बी 20। The total number of members in school management and development committee are option C 17। Which of the following is related to learners handwriting? Family, society, environment, maturation। आपण मनकर लर्नर हैंडराइटिंग कहा ऊपर रिलेट करे? फैमिली, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन ऊपर तार हैंडराइटिंग डिपेंड करे। आंसर हबो ऑप्शन डी। Which is more active in critical pedagogy? क्रिटिकल पेडागोजी रे किए अधिक एक्टिव थाए? टीचर, लर्नर, पेरेंट्स, सोसाइटी। आपण मनकर लर्नर सब बेले एक्टिव रहिबा आवश्यक। The basic purpose of school management is to help teachers in improving method, teachers in understanding pupil, teachers in dealing pupil, children learn more effectively। Option D children learn more effectively। When did multilingual education start in our state? आम स्टेट रे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन केबे स्टार्ट होइथिला? ऑप्शन बी 2006 रु 7 रे। According to Piaget, the pre-operational stage coincides with pre-childhood stage, early childhood stage, later childhood stage, adolescence। प्री ऑपरेशनल स्टेजटा आपण मानकर पियागेट अनुसार कौ स्टेज रे होई थाए? यह आपण मानकर आंसर हबो ऑप्शन बी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ए प्रश्नटी मध्य बारंबार परीक्षा रे आसी थाए। पियागेट रो गोटिए प्रश्न निहाती थिबो। By which method of assessment the weakness of a learner can be identified? को असेसमेंट रे आंबे माने लर्नर रो वीकनेस को आइडेंटिफाई करि परिबा? यार आंसर आपण माने जानि थिबे डायग्नोस्टिक। ऑप्शन बी डायग्नोस्टिक असेसमेंट रे आपण माने पिलार वीकनेस ऊपर आमे जानि पारि थाउ। समाटिव होउची आपण मानकर वर्षर शेष रे जो एग्जाम होई थाए बा असेसमेंट होई थाए ताहा को आमे समाटिव कहिबा एवं फॉर्मेटिव क्लास रो एंड रे फॉर्मेटिव असेसमेंट होई थाए। In India, the school administration should be India रे school administration should be democratic, autocratic, bureaucratic, idealistic। यार सटीक आंसर हबो डेमोक्रेटिक। आम इंडिया रे डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटर चले। Which type of motivation is related to reward? Extrinsic, intrinsic, biological, internal। मोटिवेशन होउची आपण मानकर मोटिवेशन गोटिए एक्सट्रिंसिक रिवार्ड। Which one is an example of human resource management? Human resource management रो example गोटे कोउटी? टीचर, लाइब्रेरी, क्लासरूम,
प्लेग्राउंड। ऑप्शन ए टीचर। टीचर गोटे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रो एग्जांपल। इनेट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। इनेट थ्योरी किए देइथिले? नॉम्स चॉम्स्की, इरिक्सन, कॉलबर्ग, वाइगोट्स्की। यार आंसर हबो नॉम चॉम्स्की। Which of the following is one of the foremost requisite of a good administrator? Confidence, power, care, wealth. Option A confidence. Confidence is one of the foremost requisite of a good administrator, which is not related with the objectives of motives. To energize the behavior, to stabilize the behavior, to stimulate the behavior, to activate the behavior. Option B to stabilize the behavior. Which one is not a component of educational management? Educational management रो केउटी component नुहे? एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल सुपरवाइजर। ऑप्शन बी एजुकेशनल गाइडेंस एजुकेशनल मैनेजमेंट रो कंपोनेंट नुहे। In which situation the learner construct his or her own knowledge? Teacher centered, learner centered, learning centered, subject centered. Option B learner centered. Which one is the first phase of a learning sequence? Learning sequence रो first phase कौन? Maturation, motivation, interest, action. Option B motivation. Motivation होउची फर्स्ट फेज लर्निंग सीक्वेंस रो फर्स्ट फेज। Which method of evaluation is effective for both curricular and co-curricular achievement? Formative, comprehensive, diagnostic, aptitude. Option B comprehensive is both co-curricular and co-curricular achievement. Which one is not a tool of observation? केउटी ऑब्जर्वेशन रो टूल नुहे? रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एनिकोडाटल रेकॉर्ड। ऑप्शन सी अचीवमेंट टेस्ट गोटे ऑब्जर्वेशन रो टूल नुह। Which one is the internal condition of learning? Contiguity, practice, dissemination, entering behavior. Option D entering behavior, internal condition of learning. Which method is more effective for self assessment? केउ मेथड आपण मानकर सेल्फ असेसमेंट रो मोर इफेक्टिव? ऑब्जर्वेशन, असाइनमेंट, पोर्टफोलियो, रुब्रिक्स। ऑप्शन सी पोर्टफोलियो। Portfolio is more effective for self-assessment. A project is a problematic act carried to completion in its natural setting. Who said it? Kilpatrick, Stevenson, Erickson, Steinberg. Option B Stevenson. In which step difficulty value and discriminating power of the test items are determined? Tryout, planning, preparing,
recognizing. Option A, try out. Name the first psychologist who defined the mental age. କୋଉ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ଡିଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ? ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍। ଅପସନ୍ ଡି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ? ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସଠିକ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଚୁଜିଂ, ପ୍ଲାନିଂ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ ଏଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏଟିଂ। ପ୍ରଥମେ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ପ୍ଲାନିଂ। Maturation is psychological process, mental process, learning process, biological process. Maturation गोटिए biological process. Who was the propounder of social constructivism? किए social constructivism रो propounder? ऑप्शन ए, भाइगोट्स्की। सोशियल कन्स्ट्रक्टिविज्म रो प्रोपाउंडर भाइगोट्स्की। पियागेट आपण मानकर कॉग्निटिव कन्स्ट्रक्टिविज्म। चम्स्की आपण मानकर लैंग्वेज डेवलपमेंट। कॉलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट प्रोसीडिंग द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ longitudinal axis is called as head to toe, cephalocaudal। यार सठिक आंसर आपण मानकर सेफालोकॉर्डाल, जोटा आपण मानकर हेड टू टॉय। प्रॉक्सिमो डिस्टल होउची सेंटर टू पेरिफेरी। Which method is different from the other three each assessment point of view? Field work, group work, project work, classroom demonstration। ऑप्शन डी, क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन आपण मानकर डिफरेंट। इंस्टिंक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिवनेस इज एसोसिएटेड विथ व्हिच टाइप ऑफ इमोशन? डिस्ट्रेस, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस, फियर, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। ऑप्शन बी, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। The quality education of a school management mainly depends upon infrastructural facilities, teaching learning approach, tutorial and attractive classroom and laboratories। Option B, teaching learning approach। According to Thurston's approach, intelligence comprises how many types of mental abilities? 7, 9, 10, 12। Option A, 7। In which test raw scores are directly interpreted? Standardized test, objective test, teacher made test, objective based test। एहार सठिक आंसर ହେବ ऑप्शन सी, टीचर मेड टेस्ट डायरेक्टली इंटरप्रिटेड। प्रोग्रेसिव चेंजेस इन क्वालिटी कंपोजिशन एंड कैरेक्टर इज कॉल्ड ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। एहार सठिक आंसर ହେବ ऑप्शन बी, डेवलपमेंट। Social development during adolescence include fear and shame, adult-like behavior, restlessness, imagination। Option B, adult-like behavior। Lecture method is generally called as learner-centered, child-centered, activity-centered, teacher-centered। लेक्चर मेथड को आमे जनरली टीचर सेंटर्ड मध्य कही थाउ। नंबर ऑफ टीचर्स टू बी नॉमिनेटेड टू एसएमसी इज 1, 2,
3, 4. Option A 1. Which principle is not associated with growth and development? Growth एवं development रो principle नुहे. Principle of continuity, principle of contiguity, principle of integration, principle of segregation. यार आंसर हबो ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ कंटिग्यूटी. डेवलपमेंट एवं ग्रोथ रो प्रिंसिपल नुहे. Which of the following are only visual aids? केवल visual aids को गुड़ा ब्लैकबोर्ड, चैट, फ्लैश कार्ड. यार ऑप्शन ए सटीक आंसर. Cognitive constructivism does not depend on experience of the child, environment of the child, concept of the child, inquisitiveness of child. Option B environment of the child not depends. Cognitive constructivism रो डिपेंड करे नुहे. चैनल जदि प्रथम थर पई देखछन्ती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु. Who developed the interaction analysis category system in education for increasing the teaching effectiveness? Need A. Flander, Rayon, Hamilton and Simon, Overton and Nimkov. यार सटीक आंसर है ऑप्शन ए नीड ए फ्लैंडर. ब्लैकबोर्ड इज ए व्हिच टाइप ऑफ टीचिंग एड्स? ब्लैकबोर्ड गोटे क्यों प्रकार टीचिंग एड्स? ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, नन ऑफ द अबव. यार सटीक आंसर है ऑप्शन बी ब्लैकबोर्ड गोटे विजुअल एड्स. विजुअल एड्स आ कौन सब अच्छी मैप आपण मानकर रहिगला मैप ता सहित ब्लैकबोर्ड बुक. सेक्शन 21 of the Right to Education Act deals with which of the following? Section 21 Right to Education Act क्यों कहा सहित रिलेट अच्छी? कॉर्पोरल पनिशमेंट, टीचर्स क्वालिफिकेशन, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल. यार सटीक आंसर हम ऑप्शन सी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी बा SMC. Which is the correct sequence of the evaluation? Evaluation रो correct sequence कौन? Determine what is to be evaluated, conclusion, selection of technique, collection of information. यार सटीक आंसर हम ऑप्शन ए. फर्स्ट आमे डिटरमाइन व्हाट इज टू बी इभालुएटेड फर्स्ट डिटरमाइन करबा. देन सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स को सिलेक्ट करबा. देन रही आपण मानकर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करबा. देन रही कंक्लूजन. ऑप्शन ए हम ठीक. Educational management has not been drawn from which of the following discipline? Economics, sociology, political science, chemistry. Option D chemistry. Which of the following is the first aspect of educational management? Educational management रो first aspect कौन? Organization, direction, planning, evaluation. ऑप्शन सी प्लानिंग. प्लानिंग होची एजुकेशनल मैनेजमेंट रो फर्स्ट एस्पेक्ट. व्हिच वन इज एन अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग? अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग कोउटी? टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड, लर्निंग सेंटर्ड. ऑप्शन ए टीचर सेंटर्ड गोटे अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग. Which statement is not correct about TLMS? It provides clarity of subject matter. यह ठीक रही.
हेल्प्स इन डेवलपिंग इंटरेस्ट, यह भी ठीक रही। डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंटेंट, ठीक रही। तो यार आंसर हो ऑप्शन डी। केउटी करेक्ट नुह, नन ऑफ द अबव, समस्त रही करेक्ट। तो आमर ऑप्शन डी हो गला आंसर। As per the Right to Education Act, which of the following committee is very crucial in actualizing the goals? Village level committee, school management committee, parent teacher association, mother teacher association. Option B, school management committee. Dash percent of total members shall constitute quorum for the parent teacher association meeting. parent teacher association meeting रे केते परसेंट मेंबर्स थांती? ऑप्शन ए 40%। Carroll 1965 defined educational psychology as it is the science that studies student behavior in educational settings. The study of school learning in all its aspects, a scientific study of the life stages in the development of an individual, an applied discipline which combines the two different fields of educational and psychology. यार सठिक आंसर हम ऑप्शन बी, द स्टडी ऑफ स्कूल लर्निंग इन ऑल इट्स एस्पेक्ट। On the study of child development, who wrote, growth carries a more dynamic connotation which organically ties the present with the past and directs it towards the future. Option A, Arnold Gesell. यह आपण माने घोषिकी मन रखिबे। चैनल जदि प्रथम थर पर देखुं चैनल को सब्सक्राइब कर रखु एवं सांगसाथी भाई भौणी मान सहित सेयार कर दियंतु। लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। यार आंसरटा आपण माने जानिथिबे, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। When infants think by means of their senses and motor acting is the stage of motor acting को स्टेज रे करि थाए? सेंसरी मोटर पीरियड, प्री ऑपरेशनल पीरियड, कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। ऑप्शन ए, सेंसरी मोटर पीरियड। Which of the following is not a conditions of learning? निम्नोक्त केउटी कंडीशन लर्निंग रो कंडीशन नुहे? मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, फीडबैक, एब्स्ट्रैक्शन। ऑप्शन डी। Who developed a learning theory connectionism? किए लर्निंग थ्योरी कनेक्शनिज्म डेवलप करथिले? एडवर्ड थर्नडाइक, इवान पावलोव, जॉन वाटसन, वोल्फगांग कोहलर। ऑप्शन ए, एडवर्ड थर्नडाइक कनेक्शनिज्म लर्निंग को डेवलप करथिले। तांकर आउ गोटे थ्योरी मध्ये रहिछि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। Which type of evaluation is used at the end of the course to determine students mastery on the course? केउ इवैल्यूएशन टी आपण मानकर कोर्स रो शेष रे करा जाय जोटा कि आपण मानकर डिटरमाइन करे स्टूडेंट्स रो मास्टरी उपरे। यार सटीक आंसर हो समाटिव। गोटे कोर्स रो शेष रे आमे समाटिव असेसमेंट करिथाउ बा इवैल्यूएशन करिथाउ। What is the meaning of comprehensive evaluation? It refers to the scholastic aspect. It refers to scholastic aspect. It refers to both scholastic and co-scholastic aspect. It refers to continuous process. यार आंसर हो ऑप्शन सी। comprehensive evaluation
refers to both scholastic and co-scholastic aspect. Laws of readiness of law of readiness of learning refers to law of readiness आपण माने जानिथिबे ready to learn. एहार आंसर हो ऑप्शन सी. Learning of a child grows with the increase of age. Which condition of learning refers to it? गोटे छुआर ग्रोथ सहित लर्निंग मध्य इनक्रीज करिथाय ताको हमर माने कोन कहंती. ऑप्शन बी मैच्योरेशन. मैच्योरेशन सहित आपण मानकर लर्निंग मध्य ग्रो करे. Which concept was introduced in the Progressive School of Britain? केउ कॉन्सेप्ट टी आपण मानकर प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ ब्रिटेन रो इंट्रोड्यूस्ड होइथिला. स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. ऑप्शन ए स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन. Which statement is not correct about learning? केउ स्टेटमेंट टी भूल रहिछि लर्निंग विषय रे भूल रहिछि. It is modification of behavior. यह ठीक अछि. Outcomes of it provide experience. ठीक रहिछि. It is reflex. यह भूल रहिछि. It is affects general behavior pattern. यह ठीक रहिछि. तो आपण मानकर आंसर जिवो ऑप्शन सी. It is reflex. Each institution have its own long term and short term plans is known as. गोटे इंस्टीट्यूशन रो लॉन्ग टर्म एवं शॉर्ट टर्म प्लान्स को कौन कहा जाए? एकेडमिक प्लानिंग, करिकुलर प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग. ऑप्शन डी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग. गोटे इंस्टीट्यूट रो शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म प्लानिंग को आमे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग कहि थाउ. Which of the following is not a pillar of management principle of Frederick Taylor? Success in the given work, relationship between time and salary, respectable behavior, difficulty level of the given work. Option D difficulty level of the given work. Emotional response to symbolic stimuli is primarily the result of maturation, learning, adjustment, increased sensory perception. Option B learning. Emotional response to symbolic stimuli is primarily the result of learning. Which of the following is not a factor for affective retention? निम्नोक्त केउटी affective retention रो factor नुहे? Interference, reorganization, elapsed time, all of these. Option D all of these. The process of taking new information into our already existing knowledge is known as. आमर नुआ ज्ञान सहित पूर्व ज्ञान संपर्क को कौन कहा जाए? एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, अडाप्टेशन, इक्विलिब्रियम. ऑप्शन बी एसिमिलेशन. पूर्व ज्ञान और नूतन ज्ञान मिश्रण एसिमिलेशन. Which is known for his socio-cultural theory? सोशियोकल्चरल थ्योरी किए देइथिले? एटा आपण माने समस्त ठीक करथिबे. ऑप्शन सी लिव वाइगोट्स्की सोशियोकल्चरल थ्योरी देइथिले. पियागेट आपण मानकर कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. Which of the following statement is not correct for school development plan? It is made by the concerned government. It is made by the school at local level. It is made for the development of school infrastructure. It is made with the consultation of local community. निम्नोक्त मध्यरु केउ स्टेटमेंट टी भूल रही स्कूल डेवलपमेंट प्लान रो? यार आंसर हम ऑप्शन ए इट इज मेड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट. Of all the different factors which influence the quality of education and its contribution to national development, the quality, competence and characters of teachers are doubtedly the most significant. Who said it? ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ?
सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन 1964-65, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यार आंसर हम ऑप्शन बी एजुकेशन कमिशन 1964-65। Which validity of a test is established by determining whether the test items adequately sample the skills and subject matter of the course? Face validity, empirical validity, content validity, factorial validity। यार आंसर हम ऑप्शन सी कंटेंट वैलिडिटी। A pupil's composite or average educational achievement on a battery of achievement test of school subject is called as his mental age, educational age, chronological age, attainment age। Option B educational age। Which of the following statement is correct about how are Piaget and Vygotsky similar? निम्नलिखित मध्यरु पियागेट एवं भाइगोट्स्की को सिमिलर स्टेटमेंट कोउटी? Both says cultural differences have effect on development. Both suggest development is universal. Both knowledge the role of peer interaction in development. None of the above। Option C both acknowledge the role of peer interaction in development। यह सिमिलर थिला। Zone of proximal development by ZPD is associated with the theory of Lev Vygotsky, Carl Rogers, Jean Piaget, B.F. Skinner। Zone of proximal development क्यों थियोरी सहित एसोसिएटेड अछि? ऑप्शन ए लीव वाइगोट्स्की। Stimuli that increases probability of desirable responses of the learners is known as reinforcement, explanation, illustrating with example, stimulus variation। ऑप्शन ए reinforcement। Who formulated number of postulates which explained the intervening variables essential for learning? Kohler, Skinner, Hull, Tolman। Option C Hull। Which Thorndike's law is based on the law of use and disuse? क्यों लॉटी थॉर्नडाइकଙ୍କ यूज एंड डिसयूज रो बेस्ड रे? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी लॉ ऑफ एक्सरसाइज रे आपण मानकर लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज अछि। Which of the following is a factor which assist in the progress of learning? निम्नलिखित मध्यरु केउ फैक्टर टी प्रोग्रेस लर्निंग रो फैक्टर अटे? सिग्निफिकेंस, प्रॉब्लम एटीट्यूड, अटेंटिवनेस, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। In which year the Ministry of Education was renamed as Ministry of Human Resource Development? यह प्रश्नटी पूर्वरु मध्य आसीछि। यार आंसर हबो ऑप्शन सी 1985। Which of the following is a principal academic advisor to the Ministry of Education in matter relating to school education? Central Advisory Board on Education by CABE, National Council of Educational Research and Training NCERT, University Grant Commission by UGC, National University for Education Planning and Administration by नियुक्ता। यार आंसर हम
ऑप्शन बी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बा NCERT. One who has learned to drive a Maruti car drives ambassador with little difficulty. The phenomenon illustrated is called relearning, overlearning, automatic learning, transfer of learning. Option D transfer of learning. Positive transfer of training is most possible with similar tasks, dissimilar tasks, verbal and motor tasks, none of the above. Option A similar tasks. Which of the following theories is related to learning by consequences? Operant conditioning, insight learning, classical conditioning, cognitive learning. यार आंसर हम ऑप्शन ए ऑपरेंट कंडीशनिंग. द टर्म स्कीमा डिस्क्राइब स्कीमा टर्म टी काहाकू डिस्क्राइब करे? मेंटल एंड फिजिकल एक्शन, सोशल एक्शंस, इमोशनल एक्शंस, नन ऑफ द एबव. ऑप्शन ए स्कीमा हमर मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस को डिस्क्राइब करे. Effective teaching by and large is a function of teachers' incentive, teachers' honesty. Teaching makes students learn and understand. Teachers linking or job of teaching. यार सटीक आंसर हम ऑप्शन सी टीचिंग मेक्स स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड. ताहा हमर इफेक्टिव टीचिंग. Absenteeism in the class can be minimized by punishing student, teaching the student effectively and sincerely, ignoring the fact of absenteeism, none of the above. यार सटीक आंसर हम ऑप्शन बी टीचिंग द स्टूडेंट इफेक्टिवली एंड सिंसियरली. स्टूडेंट मानकू आमे इफेक्टिवली एवं सिंसियरली पढ़ेइबा. Which type of educational management is more important than others in the following? निम्नोक्त मध्यरु केउटी एजुकेशनल मैनेजमेंट ठारू अलगा अछि? ऑथोरिटेरियन, इंटरनल एजुकेशनल मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज एजुकेशनल मैनेजमेंट, एक्सटर्नल एजुकेशनल. यार सटीक आंसर हम ऑप्शन बी इंटरनल एजुकेशनल मैनेजमेंट. Which of the following is a I style of educational management? Autocratic, democratic, decentralized, creative. यार आंसर हम ऑप्शन ए ऑटोक्रेटिक. प्रत्येक वर्ष ऑटोक्रेटिक एवं डेमोक्रेटिक रु प्रश्न आसुची, तेणु करी आपण माने ताहाको भलो भाबरे देखिबे. ए परसेंटेज बेस्ड मेथड फॉर अवार्डिंग ग्रेडिंग इज नोन एज absolute grading, relative grading, both A and B, neither A nor B. यार आंसर हम ऑप्शन ए absolute grading. What was Alfred Binet's theory? Alfred Binetଙ୍କ theory कौन थिला? Intelligence can be defined by the comparison of the performance of children at the same idea. Gifted children should be identified early and have access to specially trained teachers. People are not born with all of the intelligence they will ever have. The differentiation of human intelligence into specific modalities of intelligence rather than defining intelligence as a single ability. यार आंसर हम ऑप्शन ए इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड by the comparison of the performance of children at the same idea. यह बिनेटଙ୍କ theory थिला. In which of the following tests the word premises is associated with? निम्नोक्त मध्यरु
केउ टेस्टटी परमिसेस एसोसिएटेड सहित रिलेट अछि। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अल्टरनेट रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, मैचिंग फॉर्म क्वेश्चंस, सिंपल कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस. Premises associated with option C, matching form questions. National Staff College for Educational Planners and Administrators started in 1973 by Government of India is registered as DAS in 1979. NCERT, NCTE, CABE, NIEPA. ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ନିପା ବା NIEPA. TLM should be used by teacher as it is not very expensive, motivates learners to further prepare such materials at home, supplements teaching learning process, prepares students mentally to sit in the class. TLM यूज करिवार कारण कौन? एहार आंसर ହେବ ऑप्शन सी, सप्लीमेंट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. Which of the following types of learning materials are in the form of real objects or ideas that make the concept very clear? Visual material, surrounding environment, ICT, tactile material. ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, tactile material. Basic managerial function of human resource management are. Human resource management रो managerial functions कौन? Basic managerial functions: planning, organizing, staffing, planning, organizing and coordinating, planning, organizing, directing and controlling. ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ପ୍ଲାନିଂ, ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ, ଡାଇରେକ୍ଟିଂ ଏଣ୍ଡ controlling. A more positive attitude of parents towards school can be derived from enriched dash economic background, cultural heritage, customs and tradition, school community partnership. ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ସ୍କୁଲ କମ୍ୟୁନିଟି ପାର୍ଟନରସିପ୍. Who said that intelligence in general was the power of good responses from the point of view of truth or fact? Thorndike, Terman, Patterson, Buckingham. ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ କହିଥିଲେ. According to whom each reinforcement pulls up a reserve of responses? Hull, Gestalt, Tolman, Skinner. ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ସ୍କିନର. Scales having equal differences between successive categories refers to. Ordinal scale, nominal scale, ratio scale, interval scale. ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ. ଇକ୍ୱାଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ସକ୍ସେସିଭ୍ କାଟାଗୋରୀ, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ. Which of the following statement is incorrect as refers to portfolio? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ରହିଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବିଷୟରେ? Students get opportunity to exhibit their own talent. It makes learners more self-reflective. Both teacher and student collaborate in evaluating on student progress. It is a tool that clearly indicates making criteria. Portfolio statement କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଛି? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, It is a tool that clearly indicates making criteria. ଏହା ଭୁଲ ରହିଛି. Audio visual aids make learning
ऑडियो विजुअल एड्स आमर लर्निंग को कौन करिथाय इजी इंटरेस्टिंग इफेक्टिंग ऑल ऑफ दिज यार आंसर हम ऑप्शन डी ऑडियो विजुअल एड आमको पाठ को इजी करिथाय ता सहित इंटरेस्टिंग करिथाय ता सहित इफेक्टिव मध्य करिथाय a systematic process of determining to what extent instructional objectives are achieved by pupils is called measurement, assessment, evaluation, examination. एक systematic process रे determine करिबा instructional objects are achieved by pupils is called यह को कौन कहा जाए ऑप्शन सी evaluation. Dash means something that can be used to help achieve an aim. Replacement, resource, source, foundation. यार आंसर हम ऑप्शन बी resource. Resource means something that can be used to help achieve an aim. Educational management has been defined by G. Terry Page and J. B. Thomas as dash. एजुकेशनल मैनेजमेंट को डिफाइन करथिले जी थ्योरी एंड जेवी थॉमस. ए मेथड ऑफ ऑपरेशन एंड गुड मैनेजमेंट शुड रिजल्ट इन एन orderly integration of education and society. A body of educational doctrines comprises a number of principles, theory and practice of the organization and administration of existing educational establishment and systems. The force that integrates mean and physical plant into an effective operating unit. यार आंसर हम ऑप्शन सी theory and practice of the organization and administration of existing educational establishment and systems. At which age a child can understand similarities and distinction between words? At the age of 5 to 6, at the age of 1 to 3 years, during adolescence, at the age of 9 to 10 years. यार आंसर हम ऑप्शन ए at the age of 5 to 6 years. According to Korth-Lewins, which theory adolescents experience a rapidly widening life space along geographic, social and future time dimensions. Field theory, focal theory, grand theory, psychoanalytic theory. यार आंसर हम ऑप्शन ए field theory. Formulating general principle based on knowledge of examples and details is known as coding system, intuitive thinking, XG method, inductive reasoning. यार आंसर हम ऑप्शन डी inductive reasoning. Pavlov's experiments with home led to the discovery of a new principle which revolutionized thinking in social sciences. Cat, dog, rat, chimpanzee. यार आंसर हम ऑप्शन बी rat. The process by which an organism acquires a new mode of behavior which tends to persist and affect the general behavior pattern of the organism to some degree is known as emotion, learning, motivation, teaching. यार आंसर हम ऑप्शन बी learning. TLM should be used to make teaching more useful, make teaching impressive, provide concrete examples, facilitate learning. TLM should be used. TLM कौन पाई यूज करा जाए? यार आंसर हम ऑप्शन डी facilitate learning. Constructivist approach suggested that dash is crucial for constructing knowledge. Prior knowledge of the learner, conditioning
punishment, rote memorization. एहार आंसर हम ऑप्शन ए prior knowledge of the learner. Which theory of motivation holds that the secrets of minds are locked within the cells of the nervous system? Pawan theory, stimulus theory, depth theory, psychological theory. एहार आंसर हम ऑप्शन बी ऑप्शन सी psychological theory. Constructivism is a learning theory based on. Constructivism को लर्निंग थ्योरी को बेस्ड करे? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इवैल्यूएशनरी साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ऑक्युपेशनल साइकोलॉजी. यार आंसर हम ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिविज्म. आपण मानकर पियागेट देइथिले एवं कॉग्निटिव थ्योरी मध्ये पियागेट देइथिले. कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी आमर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी को बेस्ड करे. Which of the following is an important characteristic commonly found in effective school administrator at the primary level? Mastery over subject knowledge, leadership and management, effective communication, interpersonal relationship. एहार आंसर हम ऑप्शन बी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. According to Chomsky, humans have a dash to develop language. चॉम्स्की को अनुसार ह्यूमन हैव ए डैश टू डेवलप लैंग्वेज. परसेप्चुअल सेट, टेलीग्राफिक रेडीनेस, लर्निंग सेट, बायोलॉजिकल प्रेडिस्पोजिशन. यार आंसर हम ऑप्शन डी बायोलॉजिकल प्रेडिस्पोजिशन. According to B.F. Skinner, language development in children takes place as an outcome of dash. Inborn capacity, training in grammar, imitation and reinforcement, maturity. यार आंसर हम ऑप्शन सी imitation and reinforcement. In a learner-centric approach, a teacher should dash clarify concept by citing examples, facilitate student learning, explain concept by using adequate support materials, demonstrate inside the classroom. लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे टीचर को कार्य कौन? यार आंसर हम ऑप्शन बी टीचर केवल फैसिलिटेट करिवे स्टूडेंट मानकू. ऑप्शन बी फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग. Who was the first to use multiple choice items for assessment in 1915? किए फर्स्ट मल्टीपल चॉइस असेसमेंट को यूज करिथिले 1915 रे? जे प्यागेट, वाइगोट्स्की, स्किनर, एफ जे किल्ली. यार आंसर हम ऑप्शन डी एफ जे किल्ली. प्रथम यूज करिथिले मल्टीपल चॉइस असेसमेंट को. थॉर्नडाइक्स व्हिच लॉ ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ यूज एंड डिसयूज? थॉर्नडाइकଙ୍କ केउ लॉ अनुसार लॉज ऑफ यूज एंड डिसयूज लर्निंग बेस्ड करे? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, नन ऑफ दिस. यार आंसर हम ऑप्शन सी लॉज ऑफ एक्सरसाइज. ए प्रश्नटी आपण मानकर 2023 किंबा 24 रे मध्ये आसीतिला. 23 रे बोधे आपण मानकर आसीतिला. From the following list of methods of teaching, identify those which are learner-centered. Project work, chalk and talk, lecturing with audio-visual, computer-aided instruction, stimulus and role-playing. यार आंसर हम ऑप्शन बी 4 एवं 5. कंप्यूटर-एडेड इंस्ट्रक्शन एंड स्टिमुलेशन एंड रोल-प्लेइंग. यार आंसर ऑप्शन बी. Which of the following is a characteristics of critical pedagogy? निम्नोक्त मध्यरु क्रिटिकल पेडागोजी रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोउटी? लैंग्वेज एंड पावर, डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस, द
the neutrality of knowledge. All of these. ଏହାର answer ହେବ option D, all of these. A progressive teaching philosophy that challenges students to examine power structure and patterns of inequality within the status quo was put forwarded by Dash, Socrates, Paulo Freire, Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore. ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପାଉଲୋ ଫ୍ରେରେ. Who proposed that all children have language acquisition device? Piaget, Chomsky, Vygotsky, Dan Sullivan. କିଏ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ all children have language acquisition device? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଚମ୍ସ୍କି. ଚମ୍ସ୍କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ. Creative learning is based on dash transfer of principle and skill, discover principle and concept, memorizing facts and principles, mechanical reproduction. ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି discover principle and concept. Which of the following is a tool used for individual test of intelligence? निम्नोक्त मध्यरु केउ टूल टू व्यवहार करा जाए इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस रे? रबिन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, जोलोटा स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, नन ऑफ दीज. एहार आंसर ହେବ ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट. Which of these following statement is not related to assessment as learning? निम्नोक्त मध्यरु केउ स्टेटमेंट टी असेसमेंट एज लर्निंग विषय भूल रही? इनकरेक्ट अच्छी. Encourages students to take responsibility for their own learning, used to assess the learning weakness of the student, encourages peer assessment, none of the above. एहार आंसर ହେବ ऑप्शन बी used to assess that learning weakness of the students. ଏହା ଭୁଲ ରହିଛି. Which of the following is not true in the context of teaching learning materials? निम्नोक्त मध्यरु टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रो कोउटी ठीक नुहे? A blackboard can be used for putting the cutouts of newspapers and magazines. Teaching can be effective through the use of audiovisual aids. Audiovisual aids help comprehend difficult or monotonous content. Textbooks are one of the main TLM used in classroom. एहार आंसर ହେବ ऑप्शन बी ऑप्शन ए. A blackboard can be used for putting the cutouts of newspaper and magazines. ଏହା ଭୁଲ ରହିଛି. The quality of a test that measures what it intends to measure is dash of a test. Reliability, validity, objectivity, usability. एहार आंसर ହେବ ऑप्शन बी validity. The statement in a multiple choice type item is known as stem, distractor, response, questions. एहार आंसर ହେବ ऑप्शन ए stem. Multiple choice type item is known as stem. Which is the period for acquiring experience of social subordination to authority figures outside the family? Infancy, early childhood, later childhood, adolescence. Option C later childhood. Who is author of Animal Learning, published in 1898? L. Thornton, J.P. Guilford, P.E. Burman, E.L. Thorndike. एनिमल लैंग्वेज रो ऑथर किए? ऑप्शन डी E.L. Thorndike. The intelligence that is occupied with subjects that thinks is dash. Abstract intelligence,
concrete intelligence, social intelligence, none of these. Option B, concrete intelligence. TLM should be selected according to their availability in respective areas, the objective of teaching, their cost, none of the above. एहार आंसर हम ऑप्शन बी, the objective of teaching. The evaluation in which variety of technique are used to measure scholastic and non-scholastic area of the pupils is known as continuous evaluation, placement evaluation, comprehensive evaluation, diagnostic evaluation. एहार आंसर हम ऑप्शन सी, comprehensive evaluation. Which of the following statement is not an advantages of rubrics? निम्नोक्त मध्यरु rubrics रो कोउटी advantages नुहे. Potential to be transferred into grades provides the children more control of their own learning process. It restricts the student mind power, narrows the gap between instruction and assessment. एहार आंसर हम ऑप्शन सी, it restricts the student's mind power. Human resource management means human resource management रो माने कौन बा means कौन? A method which an organization collects, maintains and reports information on people and jobs. The process of integrating the employees' needs and aspirations with organizational needs. The process of bringing people and organization together so that the goals of each are achieved. The efforts to make life worth living of worker. एहार आंसर हम ऑप्शन सी, the process of bringing people and organization together so that the goal of each are achieved. एहा भूल रही. Which of the following is not a way of measuring retention? निम्नोक्त मध्यरु केउटी measuring retention रो वे नुहे. Method of recall, method of construction, method of relearning, method of recognition. Option B, method of construction measure retention रो वे नुहे. According to Johnson and Solomon, stemming is mainly due to dash learning faculty way of speech by imitation of other, heredity, emotional tension is observed in excessive fear, lack of balance among the two hemispheres of the brain. Option C, emotional tension is observed in excessive fear. यह थिला आजिर प्रश्न और उत्तर क्लास टी. आपण मानक जदि भिडियोटी भल लगी निहाती लाइक करेंगे और चैनल को प्रथम थर पर विजिट करथिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखिबे और सांगसाथी भाई भौणी मान सहित शेयर करदेवे. थैंक यू.